Yes, over here, when your data is being traveling from application, presentation and session, it is being called as your PDU. When it reaches to the transport layer, तो यहाँ पे आके वो बन जाता है TCP segment. ठीक है, इस चीजों को थोड़ा सा याद रखना है आपने. It becomes TCP segment. When your data travel down to the network layer, when it reaches to the network layer, it becomes what? It becomes packet. ठीक है जी. नेटवर्क लेयर के ऊपर आके आपका वही टीसीपी सेगमेंट जो है इट बिकम्स पैकेट, एंड व्हेन दिस पैकेट ट्रेवल डाउन टू द डेटा लिंक लेयर इट बिकम्स फ्रेम, राइट, एंड व्हेन इट रीचेस टू द फिजिकल लेयर इट बिकम्स signal, or it becomes in the form of zeros and ones, or the data that has to be traveled over the physical medium. Now this is how your data is going to be transformed from one position to another position. ठीक है जी. तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन के ऊपर जो डेटा की फॉर्म होती है दैट इज बीइंग कॉल्ड एज योर PDU, प्रोग्रामेबल डेटा यूनिट. When it reaches to the transport layer, it becomes TCP segment. Now why the data form has been transformed? I mean, वो क्यों चेंज हो जाती है? Because certain information is being added with your data. ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के ऊपर आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है which are being added with that particular data. That is why it is being called as PDU. जैसे ही आपका डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है it becomes TCP segment. Why? Because there are two things which are being attached. There is one thing which is being attached with your data, that is called as your port numbers. आपके पोर्ट नंबर्स होते हैं which are being attached with your data, that is called as your TCP and UDP protocols. दो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं. One is being called as your TCP protocol, another one is called as your UDP protocol. तो आपके पास certain पोर्ट नंबर्स होते हैं which are being attached with your data, and that is why your data becomes TCP segment, right? उसके अंदर TCP पोर्ट नंबर्स अटैच होते हैं, UDP पोर्ट नंबर्स अटैच होते हैं. नाउ व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दीस पोर्ट नंबर्स? वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल कनेक्टिविटी बिटवीन द होस्ट ओवर द नेटवर्क. ये अब सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट अ ट्रांसपोर्ट लेयर ये डेटा की जो फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज योर TCP सेगमेंट, राइट. नाउ व्हेन इट ट्रेवल्स डाउन टू द नेटवर्क, अब नेटवर्क पे जैसे ही पहुंचता है ना, तो योर नेटवर्क लेयर डेटा इज कॉल्ड एज योर पैकेट. हम इसे क्या कहते हैं? योर IP packet. IP stands for Internet Protocol and packet is packet. Now why your TCP segment is called as packet at the network layer? Because there is a very important information that is being attached with your network layer. This is called as your at your network layer, that is called as your IP information or your IP address or your network address. ठीक है जी. ये इंफॉर्मेशन जो है आपके पैकेट डेटा के साथ अटैच होती है, तो आपका जो पैकेट, आपका जो सेगमेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है TCP सेगमेंट से IP पैकेट के अंदर. ठीक है जी. तो नेटवर्क लेयर के ऊपर आके वो डेटा क्या कहलाएगा आपका? इट बिकम्स पैकेट, राइट. नाउ when that data is being traveled down to the data link layer, ठीक है जी. तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन अटैच हो रही होती है? योर मैक हेडर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और योर मैक एड्रेस. जो मैंने आपको बताया था ना कि लैन के अंदर आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस होते हैं व्हिच आर बीइंग अटैच्ड विथ योर डेटा. So that is being added with at a data link layer, and your data is being transformed from your IP packet to a data link layer frame. अब आपके पास यहाँ पे डेटा जैसे ही मैक एड्रेस अटैच हुआ तो it becomes frame. Now when your frame is coming down to the physical layer, it will be transformed into the form of bits, that is in the form of zeros and ones and in the form of high and low electrical signals. So this is how your data is being traveling from top to down, from application layer to the physical layer. ठीक है. और उनकी different layers के ऊपर आपके पास different data की I mean to say that visualization होती है. I mean how you are going to visualize your data. At a transport layer it is TCP segment, at a network layer it is packet, IP packet, at a data link layer it is a frame, and at a physical layer it is in the form of bits. ठीक है. अब ये इतनी सी चीज आपको समझाने का मकसद क्या था, ये सारी डिस्कशन करने का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है जी. अब आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर. द प्रीवियस चैप्टर डिस्क्राइब हाउ बिट्स आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ फिजिकल नेटवर्क. आई मीन यू नो दैट
In the previous chapter we have discussed so far how your data is being traveling over a physical medium, what type of physical medium, I mean guided, unguided media, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. This chapter introduces the concept of packets. अब देखें इस चैप्टर के अंदर हम एम्फसाइज करेंगे व्हाट द पैकेट इज. अभी जो मैंने आपको बताया दैट जो पैकेट की डेफिनेशन आपने समझी है, अभी जो मैंने आपको OSI लेयर के इन टर्म्स में बताई है, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, आई मीन OSI लेयर. लेकिन अगर हम पैकेट को इन जनरल फॉर्मेट देखें, इज अ पैकेट इज अ स्मॉल चंक ऑफ डेटा. व्हाट द पैकेट इज अ स्मॉल चंक ऑफ डेटा. लेट्स सपोज हमें पता है कि सिंगल बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, आपके पास 32 बिट्स होती हैं, ठीक है, और एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, आपके पास 8 बिट्स होती हैं, ठीक है. सो वी मे से दैट सिंगल बाइट we may call it as a packet. I'm just going to tell you that maybe 32 bytes भी आपके पास एक I mean to say that packet कहला सकता है, but for the time being you have to understand what the packet is in a very generalized form. I'm not talking about the OSI layer के ऊपर आपके पास network के ऊपर packet कहलाता है, no. I'm just going to tell you that you have to understand right now the general definition of a packet. The packet is something which is just the combination of different bits and it is the chunk of data, right? Concept of packet. The problem is a sender and a receiver need to coordinate to detect transmission errors. Individual connections between each pair of computers is not possible. Now see, we know that if there is no any concept of packet, your data would be sent from source to the destination in an unlimited form of data. ठीक है, आपका data in the form of stream of bits transfer होता रहेगा and there is no end of data. But if you are going to divide the same data in a form of smaller chunks and each of that particular chunk is called as packet, तो आपको पता चल सकता है कि where the problem is. I mean, if in between sending that particular data between source to the destination, if there is some error between the data, तो अगर आपके पास complete stream of data होगा, so it could be the possibility you are unable to figure out the problem where the error is. Lekin if you have a chunks of data which is going to be divided into a into the form of packets, so it would be very easy to figure out the problem in which packet there is some error. तो आप उस पैकेट को रिमूव करेंगे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको रीसेंड कर देंगे, ठीक है. बट इफ यू हैव अ स्ट्रीम ऑफ डेटा, आई मीन स्ट्रीम ऑफ बिट्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स, it would be very difficult at what level your error would be located or where is the error, right? It would be very difficult to figure out the error. That is the main issue with that particular if you are going to send the data without packets, right? Now what is the solution? The solution to that particular problem is shared network connection among many workstations. अब इसका concept मैं भी आपको बताता हूँ आगे, ठीक है. Now reason for using the packets, one is called as resource sharing and other one is called as to detect the errors. Now see, I have told you that resource sharing में हम क्या कर रहे होते हैं. Let's suppose if your data is being shared over the network, then at a single time one computer can send a data, another computer is going to receive the data. अगर आपके पास फ्रीम ऑफ चंक्स नहीं होंगे, आपके पास पैकेट्स के चंक्स नहीं होंगे, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एट अ सिंगल टाइम only single computer can send the data and another computer is going to receive the data. आपके पास कोई भी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगी, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास डेटा पैकेट्स के अंदर होगा तो एवरी कंप्यूटर हैज एन टेंडेंसी टू सेंड एंड रिसीव द डेटा. आई मीन आपके पास जो टाइम होगा वो शेयर हो रहा होगा. लेट्स सपोज देयर आर 7 कंप्यूटर्स and they want to share the data. What they are going to do, आपके पास एक पैकेट कंप्यूटर नंबर 1 सेंड करेगा and it would be received at the computer number 2. At the same time, when one packet is being sent and it's being received, तो आपके पास first computer को lock कर दिया जाएगा, then second computer has the chance to send and receive the data, and so on for the third, fourth, fifth, and sixth. But if we do not have the data in the form of packet, it could be the possibility the stream of bit is going to be transformed from one computer to another computer. It might be the possibility the computer number 2, 3, 4 and 5 they might not be getting the chance to send the data and to receive the data. I mean if there is no concept of packets. अगर आपके पास एक complete stream of bits send हो रही है तो it would be very difficult
between the computers to share the resources. ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर हम पैकेट्स यूज करते हैं तो क्या एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग का. अब आ जाएं टू डिटेक्ट द एरर. एज इन द प्रीवियस स्लाइड आई हैव टोल्ड यू दैट if you have a long stream of data, long stream of bits or long stream of data is going from one computer to another computer, it would be very difficult for the sender or the receiver to recognize where does the error occurs. I mean error तो आपके पास पैकेट के अंदर आ रहा होता है ना, डेटा के अंदर. आपका डेटा किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर ट्रैवल कर रहा है. Due to any sort of impairment, due to any sort of intrusion, your data bits are going to be changed from 0 to 1 and from 1 to 0. This means that your original data has been modified. Now, who is responsible to detect that particular modification and what is the procedure? That procedure is going to be easy if your data is in the form of packets. But if it is in the form of longer stream of bits, it would be very difficult to figure out कि आपके पास error किस particular bit या किस particular frame के अंदर occur हुआ है. ठीक है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि complete longer stream of bits की. But if you have the same data is being divided into a packets and when these packets are being sent over the network, it would be very easy कि आपके पास अगर first packet के अंदर कोई error आता है, that particular error is being detected by the receiver and the information would be sent to the sender that you have to resend the packet again because packet number 5 has certain error. So this is how you're going to figure out the errors by using packet switching or something like that, right? So this is the basic idea कि why we are using packets rather than a longer stream of bits. एक तो आपके पास resource sharing is very easy by using the packets and second one is to detect the errors when your data is being moving over the network. Right? See, this is the diagram which is going to show you the actual connectivity. I mean, अगर आप देखें कि figure 7.1 an illustration of one reason computer network use packets while one pair of computer communicate, others must wait. I mean, अगर आपके पास पैकेट का कॉन्सेप्ट ना हो, पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, only A would be sending data to D. आपके पास यही कनेक्शन रहेगा, दूसरे कंप्यूटर को चांस ही नहीं मिलेगा कि he would be sharing the resource and share the data over the network, right? So if we do have the concept of packet switching, I mean packets का concept है हमारे नेटवर्क के अंदर, हमने अपने डेटा को डिवाइड किया हुआ पैकेट्स के अंदर, then there would be a chance that for a first 10 bytes or the first 10 packets, your computer A would be transforming or sending that particular 10 packets to computer D. After 10, I mean when this particular transformation has been finished, when your data has been reached to the destination up to a computer D, then जो next 10 packets हैं, that would be the turn of computer B to C. ठीक है, फिर क्या होगा, आपके पास कंप्यूटर B की टर्न आएगी and then it would be sending data to computer C. But this is only in the case when you have the packet switching enabled inside your computer network. But if you don't have the packet switching, if your data is being sent in the longer stream of bits, then until and unless the whole data is finished, I mean until and unless all the data that is being sent by the computer A, when it reaches to the destination D, until and unless the computer B would not be getting a chance to send the data from B to computer C. ठीक है, जब तक वो सारा डेटा A to D तक रिसीव नहीं हो जाता तो B to C डेटा सेंड नहीं होगा. So computer B has to wait until all the data that is being transforming from computer A to computer D is going to be finished. Once it is going to be finished, then computer B would be getting a chance to send the data from B to computer C. This is what this is the case when you have the when you are sending the data in the form of long stream of bits. But if you do have the concept of packet switching, this would not be the case. I mean 10 bytes of data आपके transfer होंगे A to D, then computer B would be getting the chance and he would be transforming the data from computer B to computer C and so on. I mean sharing of the bandwidth, sharing of the data and sharing of the resources are going to be happen, and all the computers or all the nodes are going to participate in that particular network or in the communication of that particular network. So problem with sharing is demand high. Many computers need to use the shared networks. Some applications have large data transfers, hold the network for a longer time. Some application cannot wait, need mechanism for fairness, right? This is the problem with sharing. Ultimately, you have to wait for the others to complete, to send the data and receive the data, and all these things I have already told you, right?
Now, solution for the fairness. I mean, what is the solution? Solution is divide the data into small blocks or called packets. जो अभी तक मैंने आपको सारी definitions आपको discussion की है ना, that is regarding these particular slides. I mean, आप क्या करते हैं उस problem की वजह से you are going to divide your data in the form of packets, right? Or you call it as blocks or chunks. Computers take turns to send one packet at a time over the shared connection. अब होगा क्या? Every computer would be taking its turn and send one packet at a single time over a shared connectivity, right? Because each packet is small, no computer experience a long delay. I mean, because every packet has a particular amount of size. I mean, 1 kilobyte or 0.5 kilobyte. So it would be very easy for a computer to transfer that particular amount of data from one computer to another computer and give chance to another computer to send the data again, right? This is how you are going to use the पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। ये सेम एग्जांपल जो हमने पिछले उसमें देखी है, आई हैव डिस्कस विथ यू। नाउ दिस इज a mathematical example that how you are going to differentiate between data sent without packets and data sent with packets। ठीक है जी, विदाउट पैकेट अगर आपने डेटा सेंड करना है, आई मीन इन द फॉर्म ऑफ long stream of bytes or bits you want to send the data. So what would be the calculations? Let's suppose you have 5 MB of file transferred across a network with 56 kilobits per second capacity will require 12 minutes. अब आपको पता है कि 5 MB का क्या मतलब है? 5 MB means that if you come to the mathematical formula, नीचे आ जाएं आप, 1 into 10 raised to 6 bytes equals to 1 MB। ठीक है जी। If anybody have any discrepancy तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। Now we have to multiply 5 with 10 raised to 6, it becomes 5 MB multiplied by 8 bits per byte। I mean एक बाइट के अंदर आपके पास कितनी बिट्स होती हैं? We might have 8 bits, right? We have to multiply it with the 5 MB, we would be getting the total I mean size of the file. Then we are going to divide it with 56 किलोबिट्स पर सेकेंड कैपेसिटी है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 56 into 10 raised to 3 that is kilobytes multiply by 60 seconds per minute, right? And then when we are going to multiply and then divide with the upper value, we will be getting 11.9 minutes, that is approximately equal to 12 minutes. So what is the conclusion? The conclusion is all other computers will be forced to wait for the 12 minutes before initiating other transfer. Are you getting what I'm trying to say? देखें, आपके पास एक नेटवर्क के अंदर एक आपने 5 MB की फाइल भेजनी है जिसके अंदर पैकेट स्विचिंग इनेबल्ड नहीं है, ठीक है। व्हेन योर पैकेट स्विचिंग इज नॉट इनेबल्ड, दैट डेटा नीड्स 12 मिनट्स टू सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, राइट? एंड ऑल अदर कंप्यूटर्स, लेट्स सपोज देयर आर 30 अदर कंप्यूटर्स इनसाइड द नेटवर्क, all these 30 computers have to wait for the 12 minutes कि जब तक आपके पास ये ट्रांसफर हो, then the transfer would be sent to the other computer, sorry, the connection would be sent to the other computer and then it would be sending the data for again 12 minutes and so on. For those particular 12 minutes, all 29 other computers have to wait, right? This is the scenario when you are sending your data without packets, or you may say that without packet switching when you are sending your data, right? This is how you are going to implement your concept. अब आ जाएं सेम एग्जाम्पल विथ पैकेट्स। अगर हम इसी डेटा को विथ पैकेट स्विचिंग या हम पैकेट्स के अंदर डेटा को डिवाइड करके भेजेंगे, देन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? नाउ if file is broken into packets, other computers must only wait until packets, not entire file, has been sent. अब प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था हमारे पास? प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अंदर ये था कि until and unless 5 MB फाइल पूरी की पूरी जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाएगी, no other computer would be getting a chance to send and receive the data, right? That is the scenario with when you are sending the data without packets. लेकिन अगर आप विथ पैकेट्स डेटा सेंड करेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी। आपका एक पैकेट सेंड होगा, when it would be received at the receiver's end, then the other computer would be getting a chance to send the data. This means that, now see, I would like to explain you with the help of example. Suppose file is broken into 1000 byte पैकेट्स। अब आपके पास क्या हुआ, जो 5 MB की फाइल थी उसको हमने क्या किया, 1000 बाइट पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। हर एक
डेटा को स्मॉल चंक्स के अंदर डिवाइड किया एंड ईच बाइट इज ऑफ 1000 बाइट, ईच पैकेट is of 1000 byte, right? So now you have to do the same calculation, 1000 byte into 8 bits of bytes, I mean multiply करेंगे, then we have to divide it with 56 kilobits per second, that is 56 into 10 raised to 3 bits per second. That would be equivalent to 0.143 seconds. I mean it would be equivalent to 0.2 seconds. So now each packet takes less than 0.2 seconds to transmit. Now I would like to tell you the difference. अब डिफरेंस क्या है आपके पास कि यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी 5 MB फाइल को ट्रांसफर करने में कितने मिनट्स लग रहे थे? 12 मिनट्स। और उतने टाइम के लिए जो बाकी सारे की सारी रिसोर्सेज हैं, आई मीन ऑल द अदर कंप्यूटर्स हैज टू वेट, राइट? दे कैन नॉट सेंड एंड रिसीव द डेटा। दिस इज अ बिग इशू inside a network. I mean all the other computers are in the idle state and only one computer is sending the data and receiving the file, right? But when we come to the packet switching, I mean when we come to the idea of a packet, अब वहां पे क्या किया कि हमने we are going to divide that whole 5 MB packet 5 MB file of data into 1000 byte packet. अब उस 1000 बाइट पैकेट को सेंड करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए? वी रिक्वायर, आई मीन इफ यू हैव अ 56 किलोबिट्स पर सेकंड स्पीड ऑफ योर नेटवर्क, हाउ मच टाइम इट वुड बी रिक्वायर्ड? व्हेन वी कैलकुलेट इट, वी वुड बी गेटिंग 0.143 सेकंड, आई मीन दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.2 सेकंड्स. दिस मींस दैट व्हेन अ सिंगल पैकेट इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, then the chance would be given to another computer. एक पैकेट सेंड और रिसीव हुआ और उसको कितना टाइम लगा? 0.2 seconds. मे बी रैंडमली आपके पास सेकंड कंप्यूटर को चांस दिया जाए कि वो आपके पास दूसरा पैकेट सेंड करे, एंड सो ऑन. सो एवरी 30 कंप्यूटर्स वुड बी गेटिंग चांस विद इन 2 seconds टू ट्रांसमिट ऑफ योर डेटा. ठीक है जी, विद इन दो सेकंड्स के अंदर अंदर हर एक कंप्यूटर को चांस मिलेगा. एक कंप्यूटर अपना पैकेट सेंड करेगा, देन इट वुड बी वेटिंग फॉर अनदर कंप्यूटर टू सेंड द पैकेट, एंड so on. But in the previous case, what is going to be happen? Every computer has to wait for 12 minutes until the whole file is going to be transformed from one computer to another computer, right? So this is an advantage. अब ये चीज है आपको समझने की कि अगर आपके पास पैकेटिंग हुई है, आई मीन आपके डेटा पैकेट्स में डिवाइडेड है, तो इट वुड बी वेरी इजी to share the resources. It would be very easy to find the error from that particular data. But if you do not have the packets inside your data, I mean if you haven't divided your data in the form of smaller chunks or smaller packets, it would be very difficult for the person to to find the errors and to share the resources, right? So this is the basic idea regarding this. Then advantages are, I have already discussed with you. Other computers must only wait for 0.143 seconds before beginning to transmit, right? I think that is clear. If both files are both 5 MB long, each now takes 24 minutes to transmit. But if second file is only 10 kilobytes long, it will be transmitted in only 2.8 seconds, while 5 MB file still takes roughly 12 minutes. The same thing that I have told you previously, right? So these are the advantages that he's going to tell you regarding the communication with the packets and without the packets, right? Then we have the concept of packets and TDM. ठीक है जी, TDM stands for time division multiplexing, that we have discussed in our last lecture. जो हमने last lecture discuss किया था ना, उसमें हमने TDM को discuss किया था. ठीक है, what is the basic idea or criteria behind the TDM? Your signals are going to travel over the multiplexing, time division multiplexing, based on the time slicing. I mean particular time slice has been assigned to a particular signal, and during that particular time slice, that particular signal would be traveling over the network, right? And what about the frequency division multiplexing? A particular frequency or carrier frequency has been assigned to a particular signal, and for that particular carrier frequency, your signals are going to be traveled, or your signals are going to be multiplexed. And when we were talking about wavelength division multiplexing, when your optical fiber data and the data that is being traveling in the form of light, that is going to be traveled, they are going to be multiplexed in terms of light. That type of communication is called as your wavelength division multiplexing. ठीक है, तो अब हम पैकेट्स के साथ जिसको अटैच कर रहे हैं, that is called as your TDM, type division multiplexing. Dividing data into a small packets allows time division multiplexing, right? Each packet leaves the source and is switched onto the shared communication channel through a multiplexer. ठीक है, हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड्स के अंदर कि आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है. यू माइट हैव
different sets of channels or different set of signals which are being multiplexed onto a single transmission media or single transmission channel through a device that is called as a multiplexer. ठीक है, अगर आप सेकंड पॉइंट को दोबारा से पढ़ें, ईच पैकेट लीव्स द सोर्स, आई मीन आपके पास जो भी एक पैकेट सोर्स को लीव करेगा एंड इज स्विच्ड ऑन टू अ शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम उसको एक पर्टिकुलर शेयर्ड मीडियम असाइन कर देंगे ओवर अ shared channel, right? At the destination, the packet is switched through a demultiplexer to the destination. As we know that when the data is being received at the receiver's end, it has to be demultiplexed, and then the particular data would be sent to the destination accordingly, right? This is the whole procedure that we have to adopt during a time division multiplexing or during the multiplexing procedures, right? In this diagram, you can see the actual functionality. अब हो क्या रहा है यहाँ पे? If you can see, we have 3 computers which might have 3 different sort of packets. ये actually आपके पास packets को represent कर रहा है, ठीक है? Multiplexing occurs. I mean, this is a multiplexer. Your computer 1 is going to send the data, and that is going to be multiplexed and going to be sent over the shared channel. That is computer 1 using channel to send a packet, right? At the same time, when we are talking about the second diagram, that is diagram number B, in which computer 2 using the channel to send a packet. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? Computer 2 जो है that is going to send the data over a shared channel at a particular amount of time. अब देखिए इनको अलग अलग टाइम असाइंड है, उस टाइम के ऊपर आपके पास डेटा जो है वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर या उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर शेयर हो रहा है, ठीक है? In the same way, you have computer number 3 that might not be represented in a diagram, लेकिन इसी तरह से आपकी कंप्यूटर 3 के अंदर से डेटा निकलेगा और मल्टीप्लेक्सर से होता हुआ it would be passed or it would be sent over a transmission medium, right? So this is how your time division multiplexing and your packet switching is going to be occurred, right? Then this is now after discussion, after the detailed discussion regarding these concepts, we are coming towards a basic definition कि actually packet और frame होता क्या है, ठीक है जी? Now what a packet is? Packet is a generic term that refers to a small block of data. अब आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है? पैकेट हमारे पास क्या है? अभी तक मैं डिस्कस करता आया हूँ कि जी लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ डेटा पैकेट्स, लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ डेटा पैकेट. नाउ यू हैव टू बी क्लियर कि पैकेट इज अ जेनेरिक टर्म, दिस इज नॉट एन स्पेसिफिक टर्म. सॉरी, पैकेट इज अ जेनेरिक टर्म दैट रेफर्स टू अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा. आई मीन, अब स्मॉल ब्लॉक कितना है? आपके पास 1 बाइट भी हो सकता है, 1000 बाइट्स भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ योर कंप्यूटर इज गोइंग टू डिवाइड द डेटा इनटू अ स्मॉल पैकेट्स, ठीक है? उसकी साइज कितनी है? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोटोकॉल which is being used over that particular network, right? So each hardware technology uses different packets format. I mean, this is not a technology specific, make sure. This is a generic term, that is a generic packet that is being used anywhere by using any underlying network. और वो आपके पास एक स्मॉल पैकेट होगा जिसकी साइज आपके पास किलोबाइट्स में भी हो सकती है, मेगाबाइट्स में भी हो सकती है. इट वेरीज फ्रॉम नेटवर्क टू नेटवर्क, राइट? बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ frame or a hardware frame denotes a packet of a specific format on a specific hardware technology. अगर हम OSI लेयर की बात करें तो OSI लेयर के ऊपर पैकेट कहाँ पे आता है? नेटवर्क लेयर के ऊपर. फ्रेम कहाँ पे आता है? डेटा लिंक लेयर के ऊपर. तो पैकेट जो है दैट इज ओवर द नेटवर्क लेयर इज अ वेरी जेनेरिक टर्म, लेकिन व्हेन दैट पैकेट इज बीइंग ट्रेवल्ड टू अ नेटवर्क लेयर इट बिकम्स फ्रेम, एंड फ्रेम इज अ हार्डवेयर स्पेसिफिक. आई मीन, हम उसको ये नहीं कह सकते कि विदाउट आई मीन हार्डवेयर, आई मीन स्पेसिफिकेशन हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो फ्रेम और अ हार्डवेयर फ्रेम डिनोट्स अ पैकेट ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑन अ स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी. लाइक आई हैव टोल्ड यू, IP address is a virtual technology. I mean, it is a virtual address, it's not a physical address. But when we are talking about a MAC address or a frame address, that is called as your hardware or a physical address that has been associated with a particular LAN card. ठीक है ना जी? तो ये आपके पास हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है एंड दैट इज गोइंग टू बी एम्बेडेड ओवर योर लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड. लेकिन आपके पास जो आईपी होती है, आई मीन दैट इज वर्किंग ऑन द नेटवर्क लेयर, दैट इज नॉट अ हार्डवेयर स्पेसिफिक, दैट इज अ virtual ID that is being assigned to every computer over a network, and that is going to be vary from computer to computer virtually as well as physically. ठीक है, आप किसी भी कंप्यूटर को कोई भी आईपी दे सकते हैं, लेकिन
when we are talking about a hardware, sorry, when we are talking about a MAC address which always works on a data link layer, वो आपके पास कभी भी change नहीं होगी. I mean, let's suppose when I have purchased my computer, my laptop, whatsoever the MAC address that has been associated with my LAN card, with my computer's LAN card, that would remain same until and unless my computer is इन माई कस्टडी. ठीक है, जब तक वो मेरे पास कस्टडी में है तब तक आपके पास वो चीज सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. लेकिन इन द मीन टाइम अगर मैं अपनी आईपी चेंज करूं तो मे बी इफ आई एम इन पाकिस्तान my IP would be different. If I am going to use my computer in UK or USA, वहां पे जाऊंगा तो मेरी IP चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो that is dynamic, that is virtual, that is going to be changed from time to time. I mean, आप किस नेटवर्क के अंदर है वही IP आपको असाइन होगी. But if you are talking about a frame or a MAC address, तो MAC address जो है that is to be hardware specific and that will remain same throughout the life of that particular device. So packet and frame is clear. Okay, we just have 8 minutes. I'm just going to explain you regarding the frame format. Needs to define a standard format for data to indicate the beginning and end of the frame. Header and trailer used to frame the data. अब देखें, जो भी डेटा होता है ना, फ्रेम होता है आपका, मस्ट हैव सर्टेन स्टार्टिंग एंड एंडिंग बिट. आई मीन स्टार्ट ऑफ हेडर एंड एंड ऑफ हेडर. दैट इज व्हाई फ्रेम यू केम टू नो दैट कि आपके डेटा के अंदर कहां पे एरर आया और कहां पे एरर नहीं आया. बिकॉज लेट्स सपोज देयर आर 8 बिट्स इन अ फ्रेम इन अ सिंगल बाइट. तो उन 8 बिट्स के साथ आपके पास दो चीजें होंगी कि आपके पास एक इस तरह की सिग्नलिंग स्ट्रक्चर आ रहा होगा. इट इज गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ header. Now this information is for the receiver. When the receiver is going to receive that particular data, so he is going to know that through that particular bit that this is the start of a frame, and when the data is going to be ended or when that frame is going to be ended, तो वहां पे automatically एक इस तरह की bit show होगी which is going to show that this is the end of the frame. Right? So this is a frame format, and in between you have a block of data in frame. जो आपके पास data होना चाहिए frame के अंदर, that is being listed in between end of frame and start of frame header. Right? Disadvantage of framing: incurs extra overhead. SOH and EOT takes into transmit but carry no data. Now see, this is very important. I have told you in the start कि आपके पास दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं. एक आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, another one is called as connection less protocol. At the transport layer we do have two protocols. One is TCP, another one is UDP. TCP protocol is called as connection oriented protocol and UDP protocol is called as connection less protocol. Now what is the advantage of these two things? Connection oriented में हमें क्या होता है, we came to know that your data has been received at the receiver's end and receiver is going to send the acknowledgement to the sender that data has been received. This is what the acknowledgement is. Right? But when we are talking about the non-acknowledgement based protocol or the UDP, तो UDP में हमारे पास कोई भी इस तरह की वो नहीं आ रही होती कि आपका डेटा रिसीविंग एंड के ऊपर रिसीव हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, तो जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, दे माइट कंटेन्स द ओवरहेड बिट्स कि आपका डेटा कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पे एंड हुआ, एंड वेदर वी हैव टू सेंड द इंफॉर्मेशन बैक टू द सेंडर. All this control information is being attached with that particular frame. Ultimately, when extra information is being attached with the frame, it is going to create an overhead. लेकिन उसका फायदा भी है कि आपको पता चल जाता है कि आपका पर्टिकुलर फ्रेम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ रिसीवर के पास. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूडीपी इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. इट डज नॉट हैव एनी सच टाइप ऑफ ओवरहेड, इट डज नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ थिंग. तो आपका जो फ्रेम है ना, तो वो नॉर्मली आपके पास उसके ऊपर कोई ओवरहेड नहीं होता, एंड इट इज बीइंग रिसीव्ड और नॉट, दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसीवर. तो दिस इज हाउ यूर फ्रेम फॉर्मेट हैव सर्टेन प्रॉब्लम अगर आपके पास फ्रेमिंग हो रही है. ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा ओवरहेड होगा because you have the start of header and end of header has certain sort of bits which are being attached with your original data. It would be creating overhead during the transmission. Advantages क्या हैं? Accommodates transmission problem. Missing EOT indicates sending computer crashed. Missing SOH indicates receiving computer missed beginning of the message. Bad frames is discarded. The same thing, whether your data is being received or not, आपका data कहाँ से start हो रहा है, end हो रहा है, आपको पता चल जाता है. तो you can easily trace out where your frame is and how to manipulate that particular frame, right? Then you have the concept of data stuffing. अब ये हमारी next
टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा होगा ना, नेक्स्ट स्लाइड जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड समटाइम्स द स्पेशल कैरेक्टर like SOH or EOT, start of frame or end of frame, may appear in the data, right? Problem SOH and EOT as part of data will be misinterpreted as framing data. So solution to that particular problem is data stuffing. Now see, आपके पास जो ASCII characters होते हैं ना, I mean I'm going to give an example of an ASCII character. As in those particular ASCII characters, you are going to I mean confirm two bits which are being represented as स्टार्ट ऑफ फ्रेम एंड एंड ऑफ फ्रेम। लेकिन आपके पास बाकी ट्रांसमिशन के अंदर अगर ये डेटा आपके पास रिपीट हो रहा है इन बिटवीन, आई मीन इधर आपके पास डेटा जो है ना वो स्टार्ट नहीं हो रहा ना ही एंड हो रहा है, लेकिन ये बिट आपके पास रिपीटेडली आ रही है, तो डेफिनेटली इट वुड बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योर फ्रेम। आई मीन जैसे ही स्टार्ट ऑफ फ्रेम अकर होगा आपका रिसीवर समझेगा कि ये स्टार्ट ऑफ फ्रेम है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट द स्टार्ट ऑफ फ्रेम, दैट इज अ रॉन्ग बिट दैट हैज come inside that in between that original data and it occurs abruptly, right? At the same time अगर आपके पास एक I mean abruptly EOT जो bit है वो high हो जाती है या वो occur हो जाती है, I mean actually this is not an end of file, but it actually I mean misinterpreted or misleading information आपके frame के अंदर आ गई, तो it definitely it is going to create a problem for the receiver. To overcome that particular problem we have to use data stuffing. अब data stuffing क्या होती है? We have to learn that particular data stuffing in tomorrow's lecture. So in today's summary we have to use the concept of we have learned basic concepts of packets, why we use packets and frames में difference क्या होता है, and a little bit about data stuffing, right?